Good morning, dear students. I'm Abdul Shamim, Assistant Professor of English at Renuka College, based on Nagpur. Today, we are going to see the lesson All About a Dog by A.G. Gardiner. We have already discussed about part 1. In this class, we are going to see part 2. Now, before we proceed further, we are going to recapitulate what we have seen in part 1. All About a Dog is a story which revolves around the dog that the lady carries who boards the bus in order to go to her destination. But as soon as the eyes of the conductor fall upon the lady with, with the dog, he immediately warns her that the pet is not allowed inside the bus. If she wants to travel, she has to go on the upper deck. The lady who has got cough, she says that she could not go on the upper deck in such a cold weather, as she fears if she goes on the upper deck, she will get pneumonia. The conductor is also very adamant. He says that he is going to stick to the rules and he is not going to move the bus till the lady goes on the upper deck. So the bus conductor pulls the bus and the driver immediately stops. They both come out from the bus and start moving on the pavement. It is getting all the passengers feel to be tormented because it was a cold winter night and they were getting late in order to reach to their destination. And they all support the lady. They say that they are going to see that the bus conductor will take them to their destination. Meanwhile, the policeman also comes there. They at once report the matter to the policeman, but he says he is helpless. He can't do anything because the bus conductor is following all the rules and regulations. So the lady feels that she is quite helpless, so she decides to go on the upper deck. Meanwhile, all the passengers reach to their destination. The writer being the last passenger, the bus conductor comes and occupies his seat beside the writer and starts justifying his point that he was doing his duty and was following all the rules and regulation. So the writer gets an opportunity to tell that no doubt he has done his duty, he has followed all the rules and regulations. But rules are for the guidance, not to torture and torment the passengers. He has kept the rules, but has broken the spirit, and spirit is more important. At last, it appears that the bus conductor has got the point of the writer when he alights from the bus. When the writer alights from the bus, he bids him good night in a very jovial mood. अब हम आज जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी का नाम है ऑल अबाउट अ डॉग, जो हमने पहला पार्ट पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी दूसरा पार्ट शुरू करने से पहले हम पहले पार्ट में देखेंगे हमने क्या पढ़े थे। ये स्टोरी पूरी इर्द गिर्द घूमती है उस डॉग के, जो डॉग को लेडी बस में लेके आती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। लेकिन जैसे ही बस कंडक्टर उसे देखता है वो आग बबूला हो जाता है। राइटर ने उसको नाम दिया है रिजेंटफुल एम्प्लॉय, जो हर चीज के लिए रिजेंट रखता है, एंगर रखता है, नाराज होता है, गुस्सा रखता है। वो कहता है लेडी को कि तुम बस में डॉग के साथ, पेट डॉग के साथ सफर नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें सफर भी करना है तो तुम ऊपर के डेक में चले जाओ, वहां बैठ जाओ और वहां बैठ के सफर कर सकते हैं। लेडी कहती है कि नहीं, मुझे सर्दी है, ठंड भरी रात है, अगर मैं ऊपर जाऊंगी पहले मुझे कफ है, मुझे निमोनिया हो जाएगा। बस कंडक्टर ही बड़ा एडमेंट होता है, वो कहता है कि वो अपने नियमों का पालन कर रहा है, पेट अलाउड नहीं है। लेडी भी कहती है
कि वो भी अपनी बात से जरा सी अपनी वो भी ऊपर नहीं जाएंगी। बस कंडक्टर बस की बेल दबाता है, बस रुक जाती है। दोनों ड्राइवर और कंडक्टर पेमेंट बाहर आ जाते हैं बस के, और पेमेंट में चहलकदमी करते रहते हैं। सारे के सारे यात्री भी काफ़ी मुश्किल मुसीबत का सामना करते हैं। ठंड भरी रात होती है, जल्दी जल्दी उन्हें अपने घर पे पहुंचना होता है, लेकिन उन्हें देर होती रहती है। लेकिन वो भी कुछ शिकायत नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि बड़ा ही क्रूअल कंडक्टर है जो किसी की परेशानी को समझता नहीं। वो कहते हैं हम पूरा पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद वहां पर एक पुलिस वाला भी आता है। वो पुलिस वाले को सारा माजरा बताते हैं, लेकिन पुलिस वाला भी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो बस कंडक्टर अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो नियमों का पालन कर रहा है। आखिरकार मजबूरन मजबूरी में मजबूर होकर फिर उस लेडी को ऊपर जाना पड़ता है। धीरे धीरे बस अपने मंजिल तक पहुंचती है, सारी यात्रियों को छोड़ती है। आखिर में राइडर बसता है तो बस कंडक्टर उसके बाजू में आके बैठ जाता है और कहता है कि मैं तो अपनी फर्ज निभा रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, नियमों का पालन कर रहा था। राइटर उसको समझाता है कि नियम हमारे मार्गदर्शन के लिए होते हैं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं होते हैं। तुमने नियमों का पालन किया, लेकिन नियमों की तुमने जो रूह होती है वो तुमने खत्म कर दी। राइटर को ऐसा लगता है कि वो उसकी बात समझ गया है, क्योंकि जब बस से राइटर उतरता है तो वो उसे बड़े अच्छे तरीके से उसे अलविदा कहता है। Now we are going to start the second part. Meanwhile, the Pygmies party were passing through every stage of resistance to abject surrender. I will go on the top, said the silkskin lady at last. You mustn't. I will. You will have pneumonia. Let me take it. This from the man. Certainly not. She would die with her dog. When she had disappeared, When she had disappeared up the stairs, the conductor came back, pulled the bell, and the bus went on. He stood sourly triumphant while his conduct was savagely discussed in his face by the remnant of the party. Now, at last, the lady felt helpless because she saw that earlier who were supporting her, they started moving one by one. So she thought that she would have to give in, and she decided that she would go on the top. But her companions told her that she has got cough, and if she goes on the upper deck, she will get pneumonia. But she at once rejects that she has to go on the top. She has to go on the upper deck because she is helpless. She does not have any other option. So she goes on the upper deck. When the bus conductor peeps inside the bus and sees that she has gone on the upper deck, he comes inside the bus and pulls the bells. The bus driver gets the indication that he has to move the bus. Meanwhile, all the remaining passengers start discussing about the cruelty of the bus conductor before him.
अब बस कंडक्टर अंदर, अब जैसे कि उस लेडी जब देखती है कि धीरे धीरे सारे यात्री धीरे धीरे बस छोड़ के जा रहे हैं जो पहले उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो समझ जाती है कि ये बस कंडक्टर नहीं मानेगा जब तक कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। इसीलिए वो अपने दोस्तों से कहती है कि मैं अब ऊपर जाऊंगी। उसके दोस्त काफी नाराज भी होते, कहते मत जाओ क्योंकि तुम्हें कफ है और तुम ऊपर जाओगे तो ठंडी भरी मौसम में तुम्हें निमोनिया हो जाएगा। लेकिन वो कहती नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो फिर ऊपर जाती है। बस कंडक्टर आता है और देखता है बस में उस लेडी को। लेडी दिखती नहीं, उसको समझ में आ जाता है कि ऊपर चलेगी। वो अंदर आता है और बस की बेल बजाता है। ड्राइवर को इंडिकेशन और ड्राइवर ड्राइवर सीट पर बैठता है। सारे के सारे जो यात्री होते हैं वो बस ड्राइवर के सामने उसकी निर्दयता के बारे में उसके सामने बात करते हैं। कितना निर्दय बस ड्राइवर किसी की समझ, कितना निर्दय बस कंडक्टर किसी की समस्या को बिल्कुल भी नहीं समझता है। Then the engine struck work, and the conductor went to the help of the driver. It was a long job, and presently the lady with the dog stole down the stairs and re-entered the bus. When the engine was put right, the conductor came back and pulled the bell. Then his eyes fell on the dog, and his hand went to the bell rope again. The driver then, in order to start the engine, the bus conductor has to go in order to help the driver in order to start the engine. The lady who has gone on the upper deck takes the advantage and comes and occupies the seats on the lower deck. The engine is started. The bus conductor re-entered the bus and the driver occupies his seat and start the bus. But But, but when the bus conductor looks around him, he finds that the lady has occupied her seat and is sitting along with the pet dog. So at once, his hands stretches towards the bell. He pulls the bell and the bus conductor looks at the back. अब बस कंडक्टर उस ड्राइवर की मदद करने के लिए जाता है इंजन चालू करने के लिए। इसका फायदा उठाते हुए वो लेडी अपर डेक से लोअर डेक पर आ जाती है और अपनी जगह पे बैठ जाती है। बस कंडक्टर इंजन चालू करके आता है और ड्राइवर अपनी ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। लेकिन वैसे ही कंडक्टर की निगाह पड़ती हुई जब अपने आसपास देखता है वो लेडी उसको वहीं बैठी हुई नजर आती है और उसकी गोद में उसका पेट डॉग होता है। तुरंत उसका हाथ बेल की तरफ जाता है और बेल बजाता है। The driver looked around. The conductor pointed to the dog. The bus stopped and the struggle recommenced with all the original features. The conductor walking the pavement, the driver smacking his arm on the box, the little dog blinking at the lights, the silkskin lady declaring that she would not go on the top, and finally going. So as soon as the eyes of the bus conductor fell on the lady who has occupied her seat and is sitting along with her pet dog, he immediately pulls the bell. The driver gets the indication that he has to stop the bus because the lady has not gone on the upper deck. So they both move out of the bus and start walking on the conductor comes out of the bus and starts walking on the pavement. Meanwhile, the driver gets very irritated and starts hitting his hand on the box. The little dog starts winking at the light. Then the lady starts argument that she doesn't want to go on the upper deck. But at last, she has to give in and would have to go on the upper deck. अब उसके बाद जैसे ही उसकी निगाह पड़ती है बस कंडक्टर की, बस कंडक्टर बेल बजाता है और ड्राइवर देखता है, बस रोक देता है। कंडक्टर
नीचे उतरता है और फुटपाथ के ऊपर चहलकदमी करना शुरू कर देता है। इस बात को लेके ड्राइवर काफ़ी इरिटेट होता है। इरिटेशन में वो अपने हाथों को बॉक्स पर मारता है। लिटिल डॉग फिर से अपनी आंखों को मिटमिटाना, लाइट की रोशनी मिटमिटाना शुरू कर देता है। सिल्कस्किन लेडी बहस करती है कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मजबूर होकर फिर से उसे ऊपर जाना ही पड़ता है। I have got my rules, said the conductor to me when I was the last passenger left behind. He had won his victory, but felt that he would like to justify himself to somebody. Then the bus moves and the writer being the last passenger. The conductor comes and occupies his seat beside the writer. And he thinks that he should justify himself, so he says to the writer that he was only doing his duty. उसके बाद बस आगे मूव होना शुरू होती है, सबको अपने मंजिल तक पहुंचाती है। आखिर में बसता है राइटर। कंडक्टर राइटर के बाजू में आके बैठ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बात को सही ठहराना चाहिए, इसलिए वो राइटर से कहता, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। रूल्स I said are necessary things, but there are rules and rules. Some are hard and fast rules, like the rule of the road which cannot be broken without danger to life and limb. Then the writer gets the opportunity for which he was anxiously waiting. So he tells him, no doubt, there are rules. There are so many rules. But there are certain rules which are hard and fast rules. They cannot be changed. If we try to change those rules, we are going to put a life in danger. As the rules of the traffic. अब उसको राइटर समझाता है, देखिए नियम बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ के लिए नियम बने हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। अगर उसको हम तोड़ेंगे तो अपनी जान को खतरे में डाल सकते हैं। जैसे कि ट्रैफिक नियम है, अगर हम ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। बट सम आर ओनली रूल्स फॉर गाइडेंस विच यू कैन अप्लाई और विंक एट एज कॉमन सेंस डिक्टेट्स, लाइक द रूल अबाउट द डॉग्स. Then the writer further adds that there are certain rules which are only for our guidance, which we can apply or we can also avert, just like the rules of the pet dog. उसका राइटर कहता है कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमारे मार्गदर्शन के लिए होते हैं, जिसे हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं या उसका नियमों का पालन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें लगता है हमारी कॉमन सेंस की बात है ये कि कब उस नियमों का पालन करना. They are not a whip put in your hand to scourge your passengers with, but an authority for an emergency. They are meant to be observed in the spirit, not in the letter, for the comfort and not the discomfort of the passengers. The writer tries to make him understand that rules are not like a whip for him in order to torment and torture the passengers. They are just like an authority which he should try to use them in case of any emergency, and they should be followed in spirit, not in letter, in order to provide comfort to the passenger, not to harass them. No doubt he has followed the rule, but he has violated the spirit, and spirit is the soul of the rules. अब उसका राइटर कहता है कि नियम इसीलिए दिए गए हैं कि तुम उसका तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, ना कि वो तुम्हारे लिए कोई विप है जो तुम पैसेंजरों पर बरसाओ. नियम इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि ताकि तुम उससे पैसेंजरों को प्रताड़ित करो, उनको परेशान करो, बल्कि ये तो उनकी आसानी प्रदान करने के लिए है. और इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए जब कोई कठिन परिस्थिति पैदा हो जाती है. इसीलिए नियम बनाए जाते हैं ताकि पैसेंजर्स को इसका कंफर्ट मिले, ना कि पैसेंजर को इससे परेशानी हो. अब जैसे कहते हैं कि तुमने नियमों का तो पालन किया, लेकिन उसकी जो रूह है वो खत्म कर दी.
You want to mix your rules with a little goodwill and good temper. He took it very well, and when I got off the bus, he said good night quite amiably. The writer suggests him that he should try to mingle rules with his good temper, goodwill, and good temper. And the writer thinks that he has understood his message because when he has got down from the bus, he bids him goodbye in a very friendly manner. That is the indication that he has understood the message of the writer. I hope you have understood the second part. Thank you.